में, भारत चीन के बारे में, लद्दाख के बारे में इत्यादि। अब आप उसका एक भी जवाब तो दूर, उसका एक भी सवाल नहीं उठने देते हैं। आप उस प्रकार के तकनीकी बाल की खाल उतारने वाले प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन प्राथमिक रूप से विरोध करते हैं कि वो मुद्दा सामने ही नहीं आए। पहले आप कहते हैं कि ये किसी प्रकाशित किताब में नहीं है, फिर आप कहते हैं कि ये मैगजीन को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अरे भाई, ये सब वो तरीके हैं जिससे कि आप मूल मुद्दे को अवॉइड करें, सामने नहीं आने दें। आप उसका जवाब कुछ भी दीजिए, जवाब विरुद्ध दीजिए, जवाब गलत दीजिए, लेकिन प्रश्न तो पूछते। देखिए, मुझे मेरा मानना है कि जो राहुल जी जो कोट कर रहे हैं किसी बुक और मैगजीन का, और जिस विषय पे कर रहे हैं वो विषय सदन के जो अभी चर्चा का विषय है उसमें शामिल है। भारत की सुरक्षा, राष्ट्रपति अभिभाषण के तहत भारत की सुरक्षा पे चर्चा होनी चाहिए, और ये जो राहुल जी जो कोट करना चाहते हैं वो भारतीय सुरक्षा से जुड़ी हुई बात। तो उम्मीद है कि नियमों के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष नेता विपक्ष राहुल जी को न्याय देंगे, उनको बोलने का अवसर मिलेगा। ये अपने फेलियर को दर्शाना नहीं चाहते हैं। अब सदन के, लोकसभा के एलओपी विपक्ष के नेता बोलेंगे तो पूरा देश सुनेगा, पूरी दुनिया सुनेगी। ये अपनी विफलताओं के लिए कोई ना कोई बहाना मारते हैं, कोई ना कोई रूल सामने लाते हैं, और ये बिल्कुल भरपूर प्रयास करते हैं कि एलिगेशन विपक्ष पे लगा के हमें पतली गली से निकल जाना है। जो इनकी 11 साल की विफलताएं हैं, जो राष्ट्रपति अभिभाषण में किसी भी चीज की क्लैरिटी नहीं थी कि युवा को रोजगार कैसे मिलेगा, महंगाई कैसे कम होगी, जो यूएस ने टैरिफ लगाया, जो हमारे मैक्सिमम जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए सरकार क्या ये राहत दे रही है, पॉल्यूशन के लिए एक बात नहीं की गई थी। ये सारी बातों का जो उनका पिटारा है खुल ना जाए, इसके लिए कोई ना कोई बात। तो हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि यहाँ न संविधान को मानने वाली सरकार है, न लोकतंत्र की लगातार हत्या का प्रयास हो रहा है। जब लीडर ऑफ अपोजिशन किसी बात को रेफर कर रहे हैं, वो भी कोई ऐसा वैसा ये नहीं जो मतलब हाईएस्ट पद पर काम किया हुआ आर्मी में व्यक्ति हो, और उसको नहीं सुना जा रहा है, तो फिर किस बात का डेमोक्रेसी, किस बात का कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे तो समझ में नहीं आता। लेकिन स्पीकर साहब ने कहा तो कि सदन जो है सो रूल से चलता है। अब स्पीकर साहब भी प्राइम मिनिस्टर का चेहरा देख के, सरकार का चेहरा देख के ये करेंगे तो फिर क्या मतलब हुआ? जमहूरियत में, जनतंत्र में जब अपोजिशन का आवाज दबाने की कोशिश होगी तो आप लोहिया जी को याद करिए कि जब सड़कें सुनी हो जाएं तो फिर तो हंगामा होगा हाउस में। You know, honestly, I think there was an overreaction by the government side because as far as I understood, what Rahulji wished to raise was a matter that is already in the public domain. He was basing himself on a published article in the Caravan magazine which quotes a memoir by General Naravane that is still unpublished. So the government, instead of objecting to the fact that the book has not been published, should have let him speak, because in any case the magazine is publicly available. Anyone can read the same article that Rahul ji has read. I have just read it myself, others are reading it now. It seems to me that the overreaction of the government has needlessly paralyzed the House this afternoon. And to my mind, frankly, it would have been healthy for Parliament to have allowed the discussion to proceed, which is what Parliament is for. Defense Minister is saying that the facts were wrong. But then he can reply, no? The best answer, if the facts are wrong, is to correct the facts, not to prevent the facts from being aired. You all know this. If you say something wrong about me, and my entire effort is to stop you from saying it, you will get more publicity, more attention. Whereas if I tell you, I'm sorry, you were wrong, here are the facts, and especially this is a house of the people, you have a way of clarifying everything before the nation, you take the nation into confidence. Isn't that the right way to proceed? The government is also saying this is a totally insult of soldiers, insult of all our forces. I don't think that was his intention. He never got a chance to lay out his concerns. The article does not blame the forces or the soldiers at all. The issue is about some of the decisions that were taken or not taken by the central government. And that clearly is what Rahulji intended to raise. But, you know, he's explaining himself. I don't need to explain him. He's talking to the media now. So we'll see what
what you all report. And sir- All I can say is I think the government need not have overreacted. Sir, also Mr. Kiran Rijiju said that whatever Congress did during the Mr. Nehru's time, will they bring back the land? Will they answer? Well, the most important thing on this issue is that what the Congress did during the Nehruji's time was to conduct debates in Parliament. Every single day that the China War of 1962 was going on in November, there was a debate in Parliament where there was no whip. Even the government MPs were able to criticize the government and criticize Prime Minister Nehru. Do you remember that famous line when a Congress MP stood up, pointed at his bald head and said, "There is not a blade of hair growing on my head," just as Nehruji had said, "There is no blade of grass growing in Aksai Chin." He said, "Will you give this to China also?" I mean, this was the kind of debate that went on in our Parliament. 65 war, 71 war. There were parliament sessions going on. The parliament was briefed. The nation was taken into confidence. Why do we have a government that is afraid of discussion? It's really a pity. I think the government should not have reacted this way. They should have encouraged the discussion, clear the air, clarify things. The entire issue on China is a matter of great concern to the entire nation. Have a full discussion on China. Foreign Affairs Minister, Defense Minister, let them all speak and let the people know what's going on. Don't have a situation